बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है हर चैप्टर में, कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और एक अहम बात, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अहम है जिन स्टूडेंट्स ने स्पेशल एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनना है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 1 में और 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1A एंड 7A। गिव ब्रीफ रीज़न फॉर द फॉलोइंग। ए है हमारे पास स्टेटमेंट, Lanthanide contraction controls the atomic size of elements of 6 and 7 periods. B statement है हमारे पास, the oxidation states vary in period but remains almost constant in groups. Question number 4 is, explain the variation in melting point along the short periods. Question number 5 is, discuss the peculiar behavior of lithium with respect to the other members of alkali metals. Question 6 is, describe the manufacturing of sodium hydroxide by diaphragm cell and give its problems. The next unit number 4 and 6 is question 1. Give the advantages of contact process for the manufacture of sulfuric acid. Question 2. Explain the Brikeland and Eyde process for the manufacture of nitric acid. Question 3 is, explain the action of sulfuric acid on metals along with the chemical equation. Question 4. Discuss the trend in physical properties of group 6A elements. Question 5. Discuss the binding energies of first and third transition series. Question 6. Give the resemblance of D block elements. Question 7. Give systematic name of the following complexes. The first one is CrOH3H2O3. Second is PTOH2NH3 4SO4. Third one is CONH3 6Cl3, and fourth one is Na3COF6. Question number 8 is, discuss electrochemical theory. Question number 9, discuss tin plating in detail. Question number 10, what is galvanizing? Explain it. Unit number 7 plus 8 questions of important long is, question number 1, define hybridization, discuss the structure of ethane on its basis. Question 2, define cracking and explain its types with the examples. Question 3, define isomerism, explain 4 types of structural isomerism with one example each. Question number 4 is, explain reforming of petroleum with the help of suitable examples. Question 1 from the chapter number 9 and 10 is, discuss the molecular orbital treatment of benzene and stability of benzene. Question 2 is, what is sulfonation and give its mechanism. Question number 3 is, describe Friedel Crafts alkylation and acylation. Question number 4, give the orientation of benzene with OP director and M director. Question number 5 is, write a note on SN1 and SN2 mechanism. Student, this is a very important long question. Question number 6, differentiate between E1 and E2 elimination reaction. Question number 7, describe the best methods for preparation of alkyl halides.
Next, unit number 11 and 12. Question number 1 is, how will you distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol? Question number 2 is, describe any 4 chemical properties of phenol due to the benzene ring. Question number 3, describe the commercial preparation of methyl alcohol. Question number 4 is, how will you convert methanol into ethanol? And second one statement is, acetone into ethyl alcohol. Question number 5 is, describe aldol condensation with the mechanism. Question number 6, describe Canizaro's reaction with the mechanism. Question number 7, prepare formaldehyde and acetaldehyde by the industrial method. Question number 8 is, what are the haloform reactions? तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 1 बाय 1 चैप्टर्स को डिस्कस किया क्लास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक से। और ये वीडियो तमाम स्पेशल एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल करे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे चैनल पर पिछले तमाम 5 साल पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आपको PDF फॉर्म भी मिल सकती है, आप इनबॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।